हे एवरीवन एंड वेलकम टू टॉप स्कॉलर्स। बच्चों, आज का सेशन है आईसीएसई ग्रेड 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां पे हम पूरा ज्योमेट्री के यूनिट के क्वेश्चंस को कंबाइन करके सॉल्व करेंगे। ऑल द वे फ्रॉम कंस्ट्रक्शंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। तो ये देखते हैं, विदाउट यूजिंग सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी in which BC is 2.2 units, angle ABC is 90 degrees, AB is 1.8 units, AD is equal to DC, then angle ADC is 60 degrees. Construct also the perpendicular bisector of BC to meet AD at point X and measure XP. तो quadrilateral construct करना है ABCD. BC कितना है? Base BC is 2.2. So with the help of your ruler and pencil, you'll draw the base of 2.2 units. Angle ABC is 90 degrees. So we'll cut an arc like this. Cut two arcs between 60 and 120 on the upper side to draw 90 degrees, right? So ये हो जाएगा 90 degrees. Okay. So AB is how much? See, BC is 2.2 units. AB is 1.8 units. So cut an arc here. From point B, cut an arc which is 1.8 units. Correct? After that, what is given? AD is equal to DC. And angle ADC is 60 degrees. Right? And then we are supposed to construct the perpendicular bisector also. So this is A. And then AD and DC are equal. तो अगर AD and DC इक्वल है एंड एंगल ADC मतलब D पॉइंट पे हमें 60 डिग्रीज भी ड्रॉ करना है. सो द क्वाड्रिलैटरल विल लुक समथिंग लाइक दिस, वेयर द पॉइंट D विल कम ओवर हियर, AD and DC विल बी इक्वल, एंड देन विल कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC टू मीट AD एट पॉइंट X. तो ये कंस्ट्रक्शन करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का. यहाँ पे AD पे पॉइंट मिलेगा X, and then we will measure this XB. So have a look at this. ये 1.8, then 90 degrees हमने ड्रॉ किया. Angle D is over here, which is 60 degrees, and then we are just supposed to measure the length of XB. तो XB को रूलर से आप मेजर कर लो, which is 2.6 centimeters. So just mention XB is equal to approximately 2.6 centimeters, right? Okay. So that's it, children. In this session, we have covered the entire geometry part of ICSE grade 10 important questions. Thank you.